Hi everyone. So we are going to start the blue questions. Those are the in-text question answers of the chapter magnetic effect of the electric current. So we will start with the very first question. That is the question number 1. Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? We know that Jake bar magnet is a permanent magnet, right? And it have magnetic field lines, and these magnetic field lines affect the magnetic needle of the compass. We know that जो compass होता है magnetic compass, उसकी जो needle होती है, it is also a magnet itself. So that needle gets affected by the magnetic field of the bar magnet. So that is why it gets deflected, right? Next question, draw the magnetic field lines around the bar magnet. You need to draw the magnetic field lines. So we know that जो magnetic field lines होती हैं, they are in the continuous curves. You need to make the north pole and the south pole, and we know that जो magnetic field lines होती हैं, they emerge out from the bar magnet from the north pole, and they go enter it from the south pole. And these lines you need to draw in this way, like this. Clear? They enter, and inside the bar magnet they all are uniform, that is they are parallel to each other. Clear? Next question is, list the properties of magnetic lines of force. Properties you need to tell that one is that they do not intersect each other, they do not coincide each other, they have their fixed paths in which they travel, they never cut each other. That is, if they would cut each other, so it means uske दो directions will be there, but there is only one direction of the magnetic field lines. Next is that they are closer at the poles, means जो poles होते हैं bar magnet के, there is much more force of the magnetic, that is magnetic force is more at the poles, because magnetic field lines are closer at the poles as compared to the other parts. Clear? And also you can say that the magnetic field lines they originate from north pole and enter the bar magnet from the south pole. Next is, why don't the two magnetic field lines of force interact with each other? Interact क्यों नहीं करती हैं? That is, we know that they do not. अगर कोई चीज़ interact कर रही है, means it will cut each other. Like, let us take an example. Like, this is a bar magnet, and there are magnetic field lines, right? Like this, from north pole to south pole. So if they would cut each other like this, so it means there will be two directions of magnetic field. If we draw the tangent from here, it will give us this direction. From here, tangent will give us another direction. But we know that magnetic field is always having a one direction. So this is not possible to have two directions. So this is not true, which is not possible. Next comes the circular loop is given. ठीक है जी, it is a current carrying loop of wire in the circular shape. It is let the current passing through the clockwise direction जो है इस coil में से it is passing in the clockwise direction. So apply the wait a second. I'm sorry. So apply the right hand rule to find out the direction of magnetic field inside and outside the loop. हमने इस loop के अंदर और बाहर जो magnetic field है वो पता करना है. तो इसके दो तरीकों से इसको कर सकते हो. One is that in the case of circular current carrying wire, जो हमारा right hand thumb rule है वो कैसे अप्लाई करते हैं? we align और जो हमारा thumb होता है, जो let me take a diagram. जो हमारी these lines are there, they are telling us the direction of the electric current. तो हमारी जो fingers होती हैं folded fingers वो ऐसी होती हैं in this way, हाथ की. तो we align those fingers in the direction of the current in case of circular current carrying conductor. तो we will align our fingers in this direction. तो आपका thumb will point away from this side, means दूसरी side को point करेगा, right? तो which gives us the direction of the magnetic field. तो हम we can say that inside है जो it will be away from us, and जो दूसरी side है अगर बाहर की तरफ देखें तो it will be in this direction. So this is the one case how you can do.
Other is let it be divided into two parts, left hand and right hand side. ठीक है, तो first we will take this case. In this case, align your thumb in this direction of the current, and your fingers जो हैं आपकी align करेंगी in this direction, है ना. तो this is anti-clockwise direction on the left hand side, whereas on the right hand side what is there, and on the right hand side align your thumb in this direction, that will be in the downward direction. आपका thumb हो जाएगा right hand, तो आपकी fingers किस side up point करेंगी, like in this direction. Try to do this, so that is the clockwise direction. So these are the two ways in which you can find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop. Clear it is? Okay. Next comes the magnetic field is uniform in a given region is uniform. किसी region में हमें दिया हुआ है that magnetic field uniform है, तो आप इसको कैसे draw करके represent करोगे, तो that is done by drawing the parallel lines. ठीक है, तो we know that जो uniform होता है there is magnetic field lines are equidistant from each other. So this way you will represent the magnetic field lines which are uniform. Next comes choose the correct option. The magnetic field inside the long straight solenoid carrying current is जो magnetic field होता है inside the solenoid क्या होता है, we know that it is having a uniform magnetic field inside it. तो uniform होने के कारण it will be same at all the points. Next comes which of the following property or the properties of the proton can change while it is moving freely in the magnetic field. तो एक proton we have, proton होता है positive charge particle. ठीक है, let me draw a diagram. Let this be a north pole of the magnet, let this be a south pole of the magnet. ठीक है, the magnetic field is in this direction. चलो जी, ठीक है जी. उसके बाद द क्वेश्चन इज दैट हमारे पास एक प्रोटॉन है विच इज मूविंग फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड. एक प्रोटॉन है फ्रीली मूव कर रहा है, तो विच थिंग्स विल चेंज, मास चेंज हो जाएगा, स्पीड, वेलोसिटी या फिर मोमेंटम. वी नो दैट व्हेन इट विल मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी, फोर्स अप्लाई होगी, मीन्स उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. राइट, डायरेक्शन चेंज हो गई. अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वी नो दैट वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई चीज़ चेंज होती है इन द केस ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस. ठीक है, तो इफ द डायरेक्शन इज चेंजिंग वी विल से वेलोसिटी चेंजेस. क्लियर. एंड वन मोर थिंग, मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. So if this velocity is changing, it means our momentum also change. That is the amount of motion that is present in a body. That is the momentum. ठीक है, so these both will change. Next is we are having a small aluminium rod AB जो कि एक magnetic field में रखा हुआ है. You can see here, right? तो this is AB and you can see इसमें से current is passing and it is placed in a magnetic field. जो नॉर्थ पोल जो हॉर्स शू मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल इज डाउनवर्ड एंड साउथ पोल इज अपवर्ड, मीन्स करंट इज फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसके ऊपर. सो द क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड विल बी इफेक्टेड if the current in the rod AB is increased. अगर करंट इंक्रीज कर दिया जाए रॉड में से तो what will affect on the displacement, means उसके ऊपर जो फोर्स है वो कितनी लगेगी. That is we know that it depends upon the किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. The force is directly proportional to the magnetic field. अगर magnetic field बढ़ जाए dot current and length. अगर करंट बढ़ता है तो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगी, दैट इज़ फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगी. ऑल्सो नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्गर शू मैग्नेट इज यूज्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो भी फोर्स ज़्यादा लगेगी उसके ऊपर. एंड इफ थर्ड इज इफ द लेंथ इज इंक्रीज, अगर ये रॉड बड़ा हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा इंटरेक्ट करने के लिए एरिया मिल जाएगा, दैट इज़ लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है फोर्स दैट इज़ अप्लाइड, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो जितनी ज़्यादा लेंथ है the more force will act on the rod. ठीक है, hence the displacement of the rod will also be more.
Next is positively charged particle, that is a alpha particle. Now you need to understand this carefully because this is some tricky question. That is a positively charged particle is there. Alpha particle है, चाहे वो प्रोटॉन हो सकता है, that it could be. तो it is projected towards west. वो west direction में उसको छोड़ा गया है, right? तो and the इट इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ. वो छोड़ा तो वेस्ट डायरेक्शन में गया था, बट इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ. वो नॉर्थ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है, मीन्स उसके ऊपर कोई फोर्स लगी, इसकी वजह से जो नॉर्थ डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो गया. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने पता करनी है, राइट? तो लेट अस ट्राई टू डू दिस. जस्ट अ सेकेंड. ओके, so this is the question. Let us take the directions. तो first is that जो magnetic जो proton है alpha particle है, it is moving in the direction which it was projected in the west direction. That is, let it be some particle, let it be alpha particle. तो alpha particle की हम जो symbol है वो ले लेते हैं. It is moving in the west direction. एंड वो मूव किस साइड कर जाता है? इन दिस डायरेक्शन, नॉर्थ की साइड. मीन्स अगर वो नॉर्थ की साइड मूव कर रहा है तो मीन्स फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही है. दैट इज जो फोर्स है इट इज इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो वी नो दैट जो करंट की डायरेक्शन होती है इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास कौन सी आ गई? दैट विल बी दिस. एंड फोर्स की इज दिस डायरेक्शन. दिस इज द फोर्स डायरेक्शन. तो वी नो दैट फ्लेमिंग्स लेफ्ट जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द फोर्स या फिर करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड. वी नो दैट अगर हम थंब को लाइन करें इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड करंट को जो मिडल फिंगर है उसको लाइन करें इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो वी कैन फाइंड दिस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट? तो वैसा ही आपने अभी करना है. आपने क्या करना है? अपना जो थंब है उसको अलाइन करना है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन. इन दिस साइड आपने अपना थंब को लाइन कर लेना है सबसे पहले, लेफ्ट हैंड का, राइट? कर लिया है सभी ने? ओके, ठीक है. अपवर्ड ही रखना है अपना थंब, अप राइट, सीधा. एंड आफ्टर दैट यू विल अलाइन योर दैट इज द मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द in the direction of the, just a second. So as you align your middle finger in this direction and अपना thumb इस direction में align करोगे तो you will find कि आपकी जो finger है it will point in the upward direction. वो बिल्कुल ऊपर की तरफ, जो ये वाली जो finger है वो ऊपर की तरफ align करेगी. तो दिस इज जो मैग्नेटिक फील्ड है इज इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर इट इज? ओके. सो नेक्स्ट कम्स स्टेट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन जस्ट नाउ. ये फ्लेमिंग्स रूल क्या बताता है हमें? लेट मी ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम. लेट इफ वी अलाइन आवर थंब in the direction of the force and our first finger in the direction of the magnetic field B and our forefinger जो हमारी middle finger है in the direction of the current and others को हम वैसे ही रख लेते हैं साथ में, other two fingers, right? So this is how we can find अगर two things we know the two things that is which are mutually perpendicular to each other. दोनों perpendicular अगर current है that is I and the magnetic field are perpendicular to each other, तो force भी उसके perpendicular ही लगेगी. that is given by the thumb. Clear it is? Okay. Next comes what is the principle of electric motor. We know that the principle जो है electric motor में that is based upon the force on the current carrying conductor which is placed in the magnetic field. It experiences a force. वो force किस law से find out करते हैं? with the help of Fleming's left hand rule. तो आपने simply ये लिख देना कि it is based upon the principle of Fleming's left hand rule. No, you need to tell that force that is applied that is the force is applied when the current carrying conductor is placed in the magnetic field, and we find out the direction of that force with the help of the
Fleming's left hand rule, right? Next is, what is the role of split rings in the electric motor? Split rings का क्या रोल होता है इलेक्ट्रिक मोटर में? That is, they simply change the direction of the current, right? So the role of the split ring, also known as commutators in the electric motor, is to reverse the direction of the electric current, so that जो आर्मेचर कॉयल है वो उसी डायरेक्शन में घूमता रहे. Clear? Due to this reversing of the current, the direction of force remains unchanged, and due to which जो coil है it continues to move in the same direction, वो एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है. Next comes, state the different ways to induce the current in the coil. Coil में हम कैसे current को induce कर सकते हैं? By bringing the bar magnet near the coil and changing its position continuously, right? So the current can be induced by the coil by rotating it in the magnetic field, या फिर उसको magnetic field को एक जगह पे रख लो, coil को move करते रहो, then also magnetic field can be induced. Current can be induced in the coil by keeping it stationary and rotating the magnet inside it. Magnet को move करते रहो या फिर coil को move करो, magnet को stationary रख लो. That was in the first point. Next is, the current can be induced in the coil by changing current continuously in another coil, keep kept near it. That is, अगर हम दो coils ही ले लें, जैसे हमने एक solenoid पे दो coils ले ली, right? Let this be a solenoid, ठीक है? It is connected with the coil 1 and इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. Let me draw the diagram symbol. This is not the appropriate one. So let here be a battery. It is connected. So one more coil we have taken, coil B, and it is further connected with the galvanometer. So when the current is passing from this coil, it produces the magnetic effect. ठीक है, magnetic effect होता है because electricity से magnetic effect generate होता है, तो it will also affect the coil B, right? जिसकी वजह से galvanometer will show deflection. But ये galvanometer only one time deflection show करेगा because it only detects the presence of the current. उसके बाद current है जो induced current है जो वो constant हो जाता है, तो do not show the deflection afterwards. Okay. Next comes the question, which of the following are the correctly described in the magnetic field near the long wire? Just a second, these are the back end question answers, so we will do these in questions in the next video. So thanks for watching this video. In case you are having doubts, you can always contact me. Thanks for watching.